यस 4 days इन मसूरी, फिर कल वापस आकर कुछ और काम था, कुछ और प्लानिंग कर रहा था आईपीएल को लेकर, और फिर कल एक मैच खेला मैंने. बट आई एम हियर, आई एम टॉकिंग क्रिकेट विद ऑल ऑफ यू लवली पीपल. एक सेकंड, थोड़ी कॉफी पीता हूँ, काफी बिजी मॉर्निंग रहा है. हम्म. तो दोस्तों, बड़ी खबर क्रिकेट जगत से कि कल आरसीबी वुमेन lifted the WPL 2024 title. Just the second time कि ये टूर्नामेंट चल रहा है, और दूसरे ही साल में एक बार फिर से एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि यही दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछले साल के WPL फाइनल में मुंबई इंडियंस से हारी थी. और कल अरुण जेटली स्टेडियम में, द ग्राउंड फॉर्मली नोन एज द फिरोज शाह कोटला के अंदर, स्मृति मंधाना एंड हर आरसीबी डिफीटेड मेग लैनिंग्स दिल्ली कैपिटल्स. आखिरी 3 गेंदें बस बची थे मैच पे, लेकिन जो जहां पे कांड हो गया था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो रहा 8 ओवर में. द 8th over ऑफ द मैच, 64 फॉर नो लॉस, मेग लैनिंग 23, शिफाली वर्मा बैटिंग ऑन 44. लग रहा था कि इस बार फिर भी आरसीबी फैंस निराश होकर वापस जाएंगे, या निराश होकर अपने फोन्स और टैब्स और डिवाइसेस बंद करेंगे. लेकिन 8वें ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलियन स्पिनर सोफी मोलिनो brought all her experience. She got 3 wickets inside 4 balls, और जहां पे 64 पे 0 दिल्ली कैपिटल्स थी, वहीं 64 फिर 3 पे अचानक स्कोर बना. सोफी मोलिनो ओपनिंग द बॉलिंग, 4 overs, 3 for 20. वहीं से दोस्तों ये जो डाउनफॉल हुआ दिल्ली कैपिटल्स की टीम का, ये वहां से शुरू हुआ. श्रेयांका पाटिल took 4 wickets, but सोफी मोलिनो was not done. उन्होंने एक रन आउट भी किया, डायरेक्ट हिट मारा राधा यादव को आउट करने के लिए, और आखिरी 10 विकेट जो गिरे दिल्ली कैपिटल्स के, वो 50 रन से कम के लिए गिरे. 10 wickets for 49, bowled out for just 113 in the 19th over. यानी कि टारगेट 114, स्मृति मानधना got us 31, anchoring 31, Sophie Devine got 30 odd, Elise Perry the highest run getter, I think she got almost 350 runs in this WPL. एलिस पेरी नॉट आउट, और फिर रिचा घोष जो हेयरलाइन फ्रैक्चर के बावजूद फाइनल के दिन मैदान पर उतरी. शी हिट द विनिंग रन्स, 17 runs, 14 balls, sending RCB fans across the world, I would say, into delirium. क्योंकि दोस्तों दूसरे ही WPL में आरसीबी एक ट्रॉफी जीती. और अब आते हैं दोस्तों दूसरे सवाल पर. ये जो आरसीबी की टाइटल है, ये आरसीबी के इतिहास में, हाँ जी, वुमेन्स फ्रेंचाइज केवल 2 साल पुरानी है, लेकिन जो मेंस टीम जो 16 साल से जो दुख आरसीबी फैंस झेल रहे थे, ई साला कप नाम दे, अब हो गया ई साला कप नाम दू. क्योंकि जी हाँ दोस्तों, पहली बार इन T20 franchise history, the RCB franchise have managed to win a trophy. So hats off to Smriti Mandana, all the RCB women's players, the coaching staff, the franchise, कि आपने इतने 16 साल के दर्द और दुख के बाद आरसीबी फैंस को एक ट्रॉफी दिया. और अब जो 22 तारीख से आईपीएल शुरू होने वाला है, कौन खेल रहा है पहला मैच आईपीएल का? चेन्नई वर्सेस आरसीबी. क्या इस बार वुमेन्स टीम की सफलता को देखकर जो गुड वाइब्स आरसीबी कैंप और आरसीबी फ्रेंचाइज और आरसीबी फैंस के दिलों में चल रहा है आजकल, क्या ये गुड वाइब्रेशंस विराट कोहली की तरफ जाएंगे? आज तक विराट कोहली ट्रॉफी नहीं जीत सकी है. लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर आईपीएल. ऑफ कोर्स different teams, different structure, different pressures, I think, on both the franchises of the RCB brand. लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है हो सके कि आरसीबी मेंस टीम आरसीबी महिला टीम से इंस्पायर होकर कुछ कर सके इस बार. देखते हैं, बात करते हैं आप और मैं अगले 15-20 मिनट तक. आई गॉट अनदर स्ट्रीम ऑन सौरभ पंथ's live channel coming at 1 o'clock. Let's see. We've got Mohit with a super chat. Thank you, Mohit, my friend. Mohit का सवाल से आज ये लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं. Mohit saying, "Hello, JB bro, where were you live? नहीं आए." Well, I told you last week I was in Missouri for 5 days. RCB what victory. Elise Perry, SPT 18 players. हमारी छोरियां छोरों से ज्यादा निकली. बिल्कुल सही कहा मोहित. 16 साल से विराट कोहली की टीम जहां नाकामयाब रही, वहीं स्मृति मानधना दूसरे साल में सफल रही. Let's go to the comments. Thank you, Mohit, again for the super chat. Nimish is saying USA is most successful team in women FIFA, but not in men FIFA, so we should not compare men's team and women's team. Bilkul, but I think RCB fans deserve some kind of trophy, and now they must be hoping that the men's team can seek inspiration
and finally give them that trophy. हालांकि अगर आप मेरे सोशल मीडिया पेजेस और मेरे इस लाइव स्ट्रीम को जानते हो, मुझे पर्सनली आरसीबी मेंस टीम से कोई उम्मीद नहीं है, बट देखेंगे इस साल क्या होता है. गुड आफ्टरनून शुभजीत, आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड टू सी यू हियर माय फ्रेंड. What's the reason for so much hype for WPL this season? I think last season was very competitive. हाँ, बहुत कम teams हैं as compared to men's tournaments, but it's good. It's good. I think the branding and the PR and the level of cricket this year was much much better. So I'm very very glad to see that the women's Premier League has gotten a lot more full houses than last year. So I think people just want to see the women's team do well. Is half of IPL 2024 shifted to Dubai due to election? We don't know. I was talking to a senior journalist yesterday from a news channel. इसी बात पर no one really knows. I don't think नौबत आ गई है कि अब तक दुबई को जाना पड़ेगा. Kumar Kanish is saying, Jamie, I feel now RCB fans should question their men's team and what they're up to these days. Well, if RCB fans have not been questioning their team for the last 16 years, I'd be surprised. Okay, I've seen a lot of anger, a lot of hate from RCB fans towards their own teams. Heartbreak. बड़े passionate fans होते हैं ये RCB वाले. But I think Kumar Kanish को काफी साल से ये सवाल पूछ तो रहे. Shikhar Singh is saying, never thought a women's match to have a full packed stadium. Bilkul, outstanding to see that. Full credits where it's due. Kudos to BCI for a great WPL. Bilkul सही कहा आपने, आपकी बात से सहमत हूँ. Shubhajit is saying, RCB a lot of match winners in Perry, Mandana, Richa, Shriyanka, when they all came together, they succeeded. Yes, and full credit to Delhi for taking the match so deep, but 114 was never really going to stop RCB. Kumar is saying, I feel women's cricket quality is not up to the mark, like in fielding, keeping, and many, especially after watching Indian player compared to foreign ones. I mean, I'm not going to be harsh on them. We've seen the boundaries. इस साल मैंने 4-5 मैच देखे. इस साल जो हम वुमेन्स फॉर्मेट में देखते हैं अक्सर के बाउंड्रीज को अंदर करते हैं, but a lot of the sixes were going deep into the stands. So I personally would want to see, the boundaries pushed back. Yes, we didn't get too many big scores this IPL, but I don't want to compare. I mean, yes, we've already got a comment how we shouldn't compare the men's and the women's game. But right now, women's cricket, especially in India, has gone to a level where personally I'm surprised it went to, given the apathy that the PCI has had for many years towards women's cricket. तो यदि हमारे महिला क्रिकेटर्स के परफॉर्मेंसेस द्वारा या फंडिंग द्वारा या बीसीसीआई के द्वारा अब कुछ मकाम तक पहुंच चुका है ये वुमेन्स गेम, आई थिंक लेट्स एंजॉय इट. लेट्स नॉट nitpick. Of course the standard has to be lifted. There's a reason why the Indian women's team has not won any big trophy. They often lose to Australia, which is the greatest women's team across formats ever. But आज के दिन let's not nitpick, my friends. गुड आफ्टरनून अमनदीप, कैसे हो? शायद इंडिया का कर्ज भी खत्म हो जाए इस बार. भाई उस टॉपिक पे तो मैं आज फिलहाल तो नहीं जाऊंगा दोस्त. The GOAT RCB team of Gale, Kohli, De Villiers, Stark should have won one trophy, I believe, but not anymore. Yes, I mean, इस साल मुझे टीम बहुत कमजोर लग रही. आएंगे उस बात पर. मोहित, थैंक यू फॉर द सुपर चैट माय फ्रेंड. आई थिंक विराट ने विश किया पर प्रेशर बढ़ गया अब. लेट्स सी, हु नोस. सूर्य विक्रम सिंह वापस आए. वो कह रहे हैं मेंस टीम की बस की बात नहीं, ये ट्रॉफी लाना इनसे ना हो पाएगा. आप और मैं एक ही पेज में दोस्त. RCB men's team have messed up their combination by trade and bad auction. Bilkul. At least a decade of bad auctions, bad team selection, bad captaincy, bad performances, bad overseas player picks. So many factors have led me to believe. आप लोगों ने शायद जियो सिनेमा में देखा होगा 3-4 दिन पहले. Jio Cinema was doing their RCB franchise preview, and they picked up a tweet of mine from 2 years ago, saying saying that RCB is the South African cricket team. South Africa से कभी IC trophy नहीं जीता जाएगा और RCB से IPL trophy नहीं जीता जाएगा. Of course, I said it in jest 2 years ago, but the point is there's a very obvious lack of leadership, lack of selections. RCB के team selection और auction selections इतने खराब है. इस बार, I mean, क्या ग्लेन मैक्सवेल और करण शर्मा आपके दो स्पिनर्स हो सकते हैं? भाई, आप अगर कोई आरसीबी फैन हो यहाँ पे तो आप बताइए, क्या केवल अगर ग्लेन मैक्सवेल आपका नंबर 1 स्पिनर हो, एक पार्ट टाइमर, और करण शर्मा दूसरा स्पिनर हो पूरे टीम में से, क्या आपकी टीम चिन्नास्वामी में टोटल्स डिफेंड कर पाएगी? भैया नहीं होगा ना आरसीबी से. During 2009 election IPL, just with polling dates, I don't think he'll go to Dubai. Yeah, I don't think so. Plus we already know the window. जब तक माई भाई और सीएस के नाम का जगनॉट है, आरसीबी मेंस नहीं जीते आईपीएल. बात तो बिल्कुल सही है जी भाई. इस आईपीएल के टॉप 4 टीम कौन सी होगी? मैं कहूंगा चेन्नई, मुंबई,
Chennai, Mumbai, Rajasthan, KKR. Did Virat fail to make a good environment for player due to his attitude? Because we see so many out of form players make comeback at CSK. Dhoni knew how to capitalize players. I mean, look, Nimesh, there's no comparison between Dhoni the thinker, Dhoni the selector, Dhoni the captain, and Dhoni the man manager. विराट कोहली बहुत बहुत पीछे हैं. विराट कोहली के पास अच्छी टीम्स रह चुकी है, लेकिन हमेशा बॉलिंग बहुत बहुत कमजोर रह चुकी है. और यदि विराट कोहली और सारे आरसीबी फ्रेंचाइज के मालिक, इनके कोचेस, स्काउट्स, यदि ये ऑक्शन के टाइम पे 15-16 साल से सही प्लेयर्स नहीं चुन पाएंगे तो भैया ट्रॉफी कहां से आएगी. आई डोंट थिंक पर्सनली इस बार आरसीबी प्लेऑफ की टीम लग रही है, बट लाइक आई सेड, होपफुली इफ इफ दे कैन पिक अप द गुड वाइब्स फ्रॉम द वुमेन्स टीम, तो आरसीबी फैंस हो सके इस साल निराश ना हो. बट आई पर्सनली, इफ आई वर एन आरसीबी फैन लुकिंग एट द करंट स्क्वाड, आई वुड लोअर माय एक्सपेक्टेशंस. कोहली के ऊपर प्रेशर रहेगा इस बार. भाई प्रेशर तो हर 16 साल से हो चुका है, तभी तो ट्रॉफी नहीं आया. Sir, do you think it's possible to play in India with spinners like Mayank Dagar and Karan Sharma and qualify? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ. RCB have a very very poor bowling lineup. Kumar Kanish कह रहे हैं, now it feels Kohli is in team like a curse. Well, it's not a curse, but I understand where you're coming from. If you have him, surely you won't win. If you have him in squad, even though he'll perform. I understand कि आप काफी कड़वा सच लेके कहां से आ रहे हो, कुमार कनिष्ठ. Sir, what are your views on Mitch Stark and KK and Eden? We have seen the ball does swing a lot early, which can be good for bowler like Stark. Bilkul, Stark is a world-class bowler, but he's not played the IPL for what, 5-6 years, and he's never been his best in T20s. I believe he's been the best in one days, then Test, but T20s, चाहे अंतरराष्ट्रीय हो या franchise, Stark has never been that big a threat. So a lot of money, almost 25 crores spent on Mitchell Stark, the same bowler who has not played the IPL for what, 5 years, if I'm not mistaken. बहुत बहुत दबाव होगा बंदे के ऊपर. मैं पर्सनली ऐसा मानता नहीं हूं कि स्टार्क के आने से केकेआर के फॉर्चून्स कुछ बदलेंगे. अक्सर प्लेऑफ टीम लगी है, बट स्टार्क विल हैव टू प्ले an insane role if RCB are to enter the playoffs. Mohit saying some media channels are saying that Virat Kohli will not play T20 World Cup. I mean, Mohit, if you've been watching my channel for the last 18 months, I've been saying Virat Kohli should not play the T20 World Cup. So I'd not be surprised. In fact, we mentioned this in the last show I did last week before we went. I don't think India have much to gain with Virat Kohli in the team. I know he's India's highest run getter. I know he's been player of the tournament twice in the World Cups. But बहुत बहुत मुश्किल है विराट कोहली जैसे प्लेयर को बाकी यंगस्टर्स के लेवल पे आना, जब उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी दिक्कत है. लुक, ही इज अ फैंटास्टिक, ही इज माय, आई मीन, आई एम हिज बिगेस्ट फैन ऑफ दिस एरा. बहुत बार कह चुका हूं कि सारे बल्लेबाजों से सबसे फेवरेट मेरे प्लेयर विराट कोहली हैं. बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन, लाइक सचिन तेंदुलकर. जब भी विराट कोहली बैटिंग करने आते हैं इंडिया के लिए, देश के लिए, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के देखता हूं. But I believe right now India will not win a T20 World Cup if they take Virat Kohli, Rohit Sharma and KL Rahul. You need youngsters. I think youngsters showed in this recent series कि वो क्या लाते हैं. तो मैं चाहूंगा, होगा नहीं ऐसा, मैं चाहूंगा, एक बार फिर से कहूंगा आप सभी के सामने, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप ना जाएं तो टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है. कड़वी बात, बहुत लोग मुझे गाली दे चुके हैं इस बात पर, मुझे एंटी रोहित, एंटी विराट कह चुके हैं. ऐसा कुछ नहीं है. इतने साल से ये बड़े बड़े प्लेयर्स, इनके नंबर्स, इनके आंकड़े थोड़े गिर रहे हैं. स्ट्राइक रेट को लेकर दिक्कतें हैं इन सारे प्लेयर्स को. आप देख लीजिए 2022 एशिया कप, इनके सहारे टीम फाइनल तक नहीं पहुंची. 5 टीम्स थी उस टूर्नामेंट में, और इन बड़े बड़े प्लेयर्स के चलते 2022 की T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्या हुआ आपने देखा है. तो आई वुड वांट अ टीम ऑफ जितेशेस एंड यंगस्टर्स टू गो एंड होपफुली win the World Cup. Who can be the front runners for purple cap and orange cap this year according to you? Shubhajit, it's never about 2-3 players. You have 6-7 players all ending up with around the same wickets. कहना मुश्किल है भाई. It's there's so many usual names. I don't know. I can't give you 2-3 names because if I do, they'll be the same guys who always come in the top 5. Is this last IPL for David Warner? Who knows? He's not playing for Australia anymore, so maybe he's very fit. Maybe he has 3-4 years more. हार्दिक कह रहे हैं जय भाई, वॉटसन, एबी, गेल, विराट एक टीम होकर कप नहीं दिला पाए. आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ आरसीबी, लेकिन शायद कॉफी कप ही अपने नसीब में है. बिल्कुल दोस्त, वही है. क्राउड इन WPL कंपेयर टू PSL. अरे भाई वहां मत जाओ यार. T20 would only be win by new young players. I believe, Mohit, yes.
RCB keep focusing on their branding. It's obviously have to play well to win. First of all, have a potential squad to win. They don't have a squad to win this year. Controversial Hardik Pandya can take place of Rohit Sharma. बिल्कुल, I don't think he should even. ये भाई इस आईपीएल में सभी टीम की बॉलिंग यूनिट एवरेज है, आपको क्या लगता है? हाँ, ऐसा कोई ताबड़तोड़ बॉलिंग तो मुझे नहीं दिख रहा है, दो जितना भी मैंने एक नजर डाला स्क्वाड्स पर, कोहली के आंकड़े नहीं गिर रहे हैं, ड्रॉप रोहित एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. Um, no, I think if you look at his strike rate, it has dipped. 2021 T20 World Cup, he struggled against the New Zealanders. Um, Kohli, I think if Kohli has to play in T20s, he should open. Number three is not the space for him right now. He's not held a bat in a match for what, 3 months now. He's not played Jan, Feb, March. It's going to take a lot of focus for Virat Kohli to get into the T20 team. But if Virat Kohli, Rohit Sharma, all these seniors have not won you a trophy in 10 years, I don't think it's going to happen this year. I'd much rather see Jaiswal, Rinku Singh. If Virat Kohli, Rohit Sharma, KL Rahul, and Hardik Pandya come back, Rinku Singh doesn't play a match, and I think that's very, very unfair. I'm saying put all these seniors aside. It was a disaster. I said it on air when Jay Shah announced. I said it's a disaster that Rohit Sharma has been called back 18 months after his final T20. Sorry, 14 months after his final T20 to play, and that too as captain. I hope KL Rahul never plays T20s again for India. You need youngsters who put a premium on strike rate. It's the players like Sky, Rinku Singh who have career strike rates in excess of 160, 165. These players stand to win you, not the 124 to 135 strike rate players. Just my guesstimation, and I believe there's a lot of truth in what I'm saying because the stats show okay, the 130, 125 strike rate players don't win you trophies. I mean, it's a fact. Quantify saying Jay WPL was being compared to PSL crowd wise. Which fool would compare WPL to PSL? यार वहां तो लोग ही नहीं है. कोई point नहीं. I don't get this PSL thing. PSL क्या है क्या PSL? कोई नहीं मानता PSL को यार यहाँ पे. Rohit Sharma as the captain has been declared advance. Oh yes, exactly. And when this happened, I remember doing a show saying that day, भाई क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? Is there chance in fortune for KKR because Gautam Gambhir is going to take all the tactical calls? I think Gautam Gambhir going back to KKR will be a big factor. You'll see better calls. To my mind, he was a far better IPL captain than someone like Rohit Sharma. He won those two titles. He very shrewd. हो सके गंभीर के आने से things will change. Do you think Stark can complete whole season? I think so. Yes. Akash is saying, do you think women's play a lot fearful or careless? I wouldn't say it's fearful or careless. Yes, we didn't see high scores. But overall, look, the women's game, unfortunately, India ke andar, it'll always be a distant second to the men's game because of so many factors. I mean, just look at the coverage men's cricket gets. Women's cricket doesn't get the facilities, doesn't get the crowd, doesn't get the venues. It's remained so far in the background. Of course, it's taken a lot of effort from the players, the board, the structure, the franchises to lift women's cricket. But I think it's come a long way in the last 7, 8 years. And I think the WPL, okay, the scores were not massive. We saw some average bowling here and there, but overall, जिस मकाम तक women's cricket हमारे इस देश में पहुंचा है, I think the road is only up from here, यार. जी मुझे नहीं लगता आरसीबी जीतेगी. वहां यंग प्लेयर नहीं है, रोल प्लेयर्स बहुत ज्यादा है. मैं वही कह रहा हूँ, T20 एक यंग प्लेयर्स का गेम है दोस्त. Kumar Kanish कह रहे हैं RCB never really retained their bowlers to try to make good bowling. RCB in 16 years have always had a very average bowling attack. Let's look at this year's bowling attack. ठीक एक सेकंड मैं आपके सामने RCB क्योंकि आज I think let's move our talk before I wrap this live in the next 10 minutes. Let's move it to uh, this IPL and look at RCB score. Okay, देखिए मैं आपको पहले bowling options गिराता हूं एक एक करके और आप बोलिए सारे व्यूअर्स भले आप आरसीबी फैन हो या ना हो आप आरसीबी की बॉलिंग स्क्वाड को देखकर बताइए क्या ये टीम प्लेऑफ टीम लग रही है. मयंक डागर, लॉकी फर्गसन, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज, राजन कुमार, हिमांशु शर्मा, करण शर्मा, स्वप्निल सिंह, रीस टॉपली, विजय कुमार विशाख, यश दयाल. ऑलराउंडर्स में आते हैं आकाशदीप, मनोज भंडागे, टॉम करन, कैमरन ग्रीन, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, सुयाश प्रभुदेसाई. पहले थोड़ा एक तरफ डालते हैं वो इंडियन प्लेयर्स अनकैप्ड जो बॉलिंग नहीं डालेंगे.
सुयाश परदेसाई बॉलिंग नहीं डालेंगे, महिपाल लोमरोर बॉलिंग नहीं डालेंगे, मयांक डागर बहुत कम डालेंगे, रजन कुमार नहीं डालेंगे, हिमांशु शर्मा नहीं डालेंगे, स्वप्निल सिंह नहीं डालेंगे, विजय कुमार विशाख कुछ मैचेस खेलेंगे, कुछ मैच के बाद टीम मैनेजमेंट उनको बाहर करेगी यश दयाल के लिए, जो कि बहुत 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 इनकंसिस्टेंट बॉलर है। ठीक है, रीश टॉपली हट्टे कट्टे लेफ्ट आर्म पेसर है, इंजरी प्रोन है। रीश टॉपली हर 3-4 मैच के बाद चोट होकर वापस इंग्लैंड जाएंगे, तो एक आप ओवरसीज नाम इनका बाहर कर दो। ठीक है, लॉकी फर्गुसन बहुत तेज डालते हैं, बहुत उम्दा बॉलर है, लेकिन इंडियन पिचेस पर बहुत बहुत कम चलते हैं। कहां चले केकेआर के लिए लॉकी फर्गुसन? दैट वन कोविड टाइम के आईपीएल में जो यूए में हुआ है। ठीक है, अजारे जोसेफ इन्होंने कुछ बहुत साल पहले शुरुआत करी 6 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस के लिए, आजकल वो आईपीएल पूरे सीजन नहीं खेल पाते। यदि वो कोई टीम में हो तो 14 में से वो 6 मैच खेलते। अजारे जोसेफ आपको आईपीएल ट्रॉफी नहीं जिता पाएंगे। ठीक है, टॉम करन बहुत एक्सपीरियंस है, कोई भी आईपीएल सीजन में 4-5 मैच के बाद बंदा टिक नहीं पाया। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल यदि फिट रहे तो ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के सारे मैचेस खेलेंगे। क्या ग्लेन मैक्सवेल आपके फ्रंट लाइन स्पिनर हैं? करण शर्मा आपके फ्रंट लाइन स्पिनर है? भैया इस साल आईपीएल ट्रॉफी ऐसी बॉलिंग से लेकर भूल जाओ। कैमरन ग्रीन बंदा इतना अच्छा खेला वहां पे मुंबई इंडियंस पे, अब ये आए हैं आरसीबी। चिन्ना स्वामी के छोटे स्टेडियम में बंदा बहुत रन मारेगा, बहुत लंबे छक्के टांगेगा यदि, और यहां पे मुश्किल वाली बात है आरसीबी को लेकर। आरसीबी हैव नेवर रियलाइज्ड हाउ बेस्ट टू यूज देयर फॉरेन प्लेयर्स। आई एम टेलिंग यू, आरसीबी विल हैव कैमरन ग्रीन ओपन, बैट 3 बैट 4, एक आध मैच के लिए उनको नीचे कर देंगे। मैं होता आरसीबी फ्रेंचाइज, मैं कैमरन ग्रीन को पूरा सीजन नंबर 3 पे खिलाता, पूरा सीजन। क्या आरसीबी वाले करेंगे? मुझे डाउट है। ठीक है, तो कौन बचे? मोहम्मद सिराज इनके पेस स्पीड हेड है, लेकिन पिछले 2 आईपीएल में इनकी इकोनॉमी 10 से ऊपर है। मोहम्मद सिराज आपके बेस्ट बॉलर है, बढ़िया है, लेकिन टी20 में वो काफी इनकंसिस्टेंट है। आकाशदीप पहले खेल चुके हैं आरसीबी के लिए, क्या आकाशदीप आपके फ्रंट लाइन बॉलर है? माफी चाहूंगा, मुझे लगता नहीं है आरसीबी के पास प्ले ऑफ पहुंचने के लिए बॉलिंग है। सर, SRH have a lot of quality overseas player. We'll do a dedicated show tomorrow. I want to talk about SRH and how they potentially made a blunder by making Pat Cummins captain, but वो हम कल के शो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आरसीबी के बारे में। WT20 team now, अच्छा, I was comparing women's cricket with their earlier performance, not only with men's cricket. Okay, no, definitely, Akash, the women's team has become a lot more consistent. They're not winning as much trophies, but they're getting to finals. And I think the fact that you're getting to finals shows कि आप कहीं ना कहीं right track पे हो। Finals नहीं आ रहे, ये भी बड़ी बड़ी सोचने की बात है। But overall, I've seen women's cricket really grow, and a lot of that is because of T20 cricket. Okay, sticking to the topic about RCB. By the way, I'm taking only RCB questions. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको आरसीबी कल के फाइनल को लेकर या आरसीबी आने वाले आईपीएल के बारे में क्वेश्चंस हो तो आप वही करें। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड स्टिक टू द टॉपिक। ऑन दैट नोट सर, आरसीबी में बेटर प्लेयर्स बाहर बैठेंगे और उनसे खराब प्लेयर्स 11 में खेलेंगे, like Topley and Will Jacks will sort of sit out. Look, I understand there's a crunch, Shubhajit, to put in foreign players. I believe it'll be a travesty if a gun player, a gun all-rounder like Will Jacks, जो कि ओपनिंग करते हैं, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग डाल सकते हैं, मेरे हिसाब से विल जैक्स आज के टी20 लैंडस्केप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जब ये बंदा चलेगा तो ये चिन्ना स्वामी में अलग अच्छे खासे बॉलर्स का भूत बना सकता है। RCB didn't know what to do with Finn Allen. I hope RCB find a way to give Will Jacks as many matches as possible. Use him as your impact player. Sir, which overseas fast bowler will start for RCB? Reece Topley or Alzari? I think it'll probably be Reece Topley, but like I said, मुझे फिक्र है कि Reece Topley फिर से चोटिल होकर बाहर जाएंगे। ये बंदा 4-5 मैच से ज्यादा कभी नहीं टिका हो, चाहे इंग्लैंड की टीम हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट। I would go for Reece Topley, but I don't know आजकल उनका current fitness status क्या है। Jamie, how would you rate women RCB bowling this season? I feel it's one of the best. That's why they won. No, the bowling was very, very good. When you bowl out a team like Delhi Capitals with all that batting power for 113, and look at this, what, 10 days ago, I think,
the RCB was staring at elimination, but they got it together, you know. So definitely for me, the most impressive bowling unit because they don't have a lot of pace. Elise Perry is not getting any younger. They have some decent spinners. But for Indian conditions, for me, it's the best bowling attack. The team that bowls you to the final, the team that wins the final, not with the bat, with the ball, has to be the best bowling attack in the team. Shriyanka Patil, what, four for 14 yesterday? Gajab hai yaar. Late to your live, RCB fans deserve this trophy. Yes, we discussed that in the last half an hour. What are the fact? Oh, we've already discussed it, my friend, sports fan. We've discussed it at length. Mohit has gone off topic. Guys, let's keep it to RCB. I'm going to be doing a show every day on each team. आज RCB की बात करेंगे, कल SRH के बारे में बात करेंगे. अभी 4-5 दिन है IPL से पहले, बहुत बहुत हम बात करेंगे. आज हम बात करेंगे RCB because it is after all a historic win for RCB. Men's, women's दोनों franchise को लेकर जिस टीम ने 17-16 साल से कुछ नहीं हासिल किया, कल के दिन स्मृति मानधना की टीम ने ट्रॉफी जिताया in just the second edition of the WPL. So we've discussed a lot of other topics. मैं चाहूंगा कि जो बिल्कुल जो 4 मिनट बचे हैं इस लाइव स्ट्रीम पर, यदि किसी व्यूअर के पास आरसीबी को लेकर कुछ सवाल हो, either on yesterday's match or on going forward looking at the IPL, let's do that. On that note, Priyanshu, hats off to Virat fans for supporting women cricket and coming to ground to support. Good point. Nimesh Pandey, Anil Kumble was the best captain for RCB. In a short span of time, he did some good things. So I think even Faf did not do best captaincy. He is found to be clueless many times, and with these bad bowlers, I really feel bad for him on RCB. Exactly, RCB. It's not always about the captaincy, you know. Of course, विराट कोहली को 10 साल दिए गए और वो एक ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन it's about selection. It's about getting the right bowlers. I mean, Kyle Jamieson ने एक न्यूजीलैंड टूर में विराट कोहली का विकेट 2-3 बार लिया तो विराट कोहली ने कॉल करके बोला कि भाई इस बंदे को डालो मेरी टीम में. कितने 15 करोड़ दिए थे कायल जेमिसन. क्या किया बंदा उसके बाद टी20 में इतना खराब लगा. They've taken Colin de Grand home, Tim Southee, Chris Jordan, ऐसे प्लेयर्स को खिलाए हैं जो नहीं चले. इनके पास एडम जैम्पा था, इनको जाने दिया. इनके पास हसरंगा था, इनको जाने दिया. आरसीबी की बॉलिंग 16 साल में हर साल कभी भी टाइटल विनिंग ट्रॉफी बॉलिंग स्क्वाड मुझे नहीं लगी. एंड आई थिंक इस साल तो मुझे बहुत बहुत घटिया लग रही है इनकी बॉलिंग. Just remember, men's RCB also had chance to win IPL in second tournament against DC. They did. But then Herschel Gibbs batted 20 overs for 52 runs. I think Kumble got 4 wickets in that match. But again, RCB के ऊपर एक काला साया है जो hopefully इस साल उड़ जाए because I would want to see Virat Kohli leave the IPL with a trophy. But with this bowling, बहुत मुश्किल है. Also the RCB's Indian talent नहीं हो पाएगा यार. विराट कोहली के बाद पाटीदार और कार्तिक आपके बेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं. नहीं हो पाएगा ना. Do you think 114 scores should be done in 14-15 overs? They were playing real slow and bogged down because win karna tha. Harsh, but I mean, you know, it's the Kotla, it's a tricky track. Delhi have a good bowling attack. All said and done, RCB jeet gaya. I think that's the underlying story. Ee sala only women's cup naam de. जज्बात हैं आपकी बातों में. What do you think Cameron Green buy in the men's team? We just discussed this, I think, Sportsman, before you joined. And I said, I don't think we're going to see a settled batting order for Cameron Green. I mean, he had a good thing going. I think the poor guy is going to have his IPL graph will go down having joined RCB. Chinnaswamy ground is a nightmare for captain as well as bowlers. The day RCB makes strong bowling, they will win. हाँ, but वो दिन अब तक नहीं आया तो नहीं आएगा भाई. I am sure that Virat failed to make a good environment dressing room. उनके अनिल कुंबले के साथ भी पंगा हुआ है, बिल्कुल हुआ है. I've heard that he's made some mistakes, but overall he's been successful in the test format as a captain. So पता नहीं यार क्या है exactly मसला RCB को लेकर. Why did RCB pick Alzai for 11 crore and Yash Dayal for 5 crore? I mean, exactly inconsistent bowlers. यश दयाल, अल्जाई जोसेफ, ये दोनों पेस बॉलर्स कभी एक सीजन पूरा मैच नहीं खेलेंगे. So I don't know. It's the same old story. Bad auction, bad selection. Doesn't make sense. चलिए, last question of the day, last comment. King built the kingdom, Queen gave jewel. Without Virat, RCB fan base nothing. ये मैं कह चुका हूँ अलग लाइव स्ट्रीम्स पर. जिस दिन विराट कोहली रिटायर होंगे, हो सके RCB franchise ही बंद हो जाए. That entire franchise base is based on one player, and unfortunately, at some point in the next 5 years, Virat Kohli will leave RCB, and maybe as a franchise,
RCB itself might shut down. So who knows? Who knows? Who knows? Anyways, guys, I've got to hop on to another live stream in 5 minutes. You can see me on Saurabh Pant's live stream. It's me, Saurabh Pant, Anirban Dasgupta, and Anu Menon, Urf Lola Kutti. We'll be doing an hour-long stream on the IPL. So I'll see you there in a few moments. Otherwise, have a great Monday. मैं आपसे कल मिलूंगा इसी लाइव स्ट्रीम पर. Take care. Good day. Jai Hind.